Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to uninstall Oracle REST Data Services 20.3 from Windows 10. इंशाल्लाह आज हम ये सीखेंगे कि Oracle REST Data Services 20.3 को इंस्टॉल कैसे किया जाता है Windows 10 में से. So फर्स्ट ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर. राइट, सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोल लें एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से. इसे Oracle REST Data Services वर्जन 20.3 आप देख रहे हैं कि Oracle REST Data Services 20.3 अवेलेबल है. कमांड प्रॉम्प्ट खोल लें एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से और वहाँ जाएं जहाँ ords का फोल्डर इंस्टॉल है. And reach where ords folder is installed and run this command java space dash jar space ords.war space uninstall and hit enter button. और ये वाली कमांड चलाइए java space dash jar space ords.war space uninstall और एंटर का बटन दबा दीजिए. The option is enter number 1 NUMBER, enter number 4. This option I have not already written. ऑप्शन मैंने पहले नहीं लिखा हुआ था, इस वजह से लिखना पड़ रहा है. ऑप्शन विल बी 1 एंड हिट एंटर बटन. ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबा दीजिए. डेटाबेस सर्वर इज लोकल होस्ट, प्रेस एंटर. डेटाबेस सर्वर लोकल होस्ट ही रहेगा, एंटर का बटन दबा दीजिए. प्रेस एंटर. पोर्ट इज 1521, प्रेस एंटर बटन. पोर्ट 1521 ही रहेगी, एंटर का बटन दबा दीजिए. specify database SID. Option will be 2. Press enter button. ऑप्शन 2 लिखें और एंटर का बटन दबा दीजिए. प्रोवाइड योर सेट, अपने सेट बता दीजिए और एंटर का बटन दबा दीजिए. इस पर मेंशन योर सेट एंड हिट एंटर बटन. यूजर विल बी sys. User will be sys, provide its password and confirm password. यूजर sys होगा, पासवर्ड और confirm password दे दीजिए. Retrieving information. Now the uninstallation has completed. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.